Ladies and gentlemen, you can now see the mobile column comprising 3 ships. Coming up ahead, on the right side, the lead vessel is Indian naval ship Sunena, Papa 57. A sister ship of the presidential yacht Sunena is based in Kochi and sailed as the Indian Ocean ship Sagar, with a combined crew comprising sailors from Indian Ocean littoral navies. She is presently commanded by Commander Siddharth Chaudhary. देवियों और सज्जनों, अब आप आगे बढ़ते हुए 3 जहाजों के मोबाइल कॉलम को देख सकते हैं। इस कॉलम का नेतृत्व कर रहा है भारतीय नौसेना का युद्धपोत सुनैना, जिसने इंडियन ओशन शिप सागर के रूप में भारतीय महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के नाविकों के संयुक्त दल के साथ भी समुद्री अभियान किया है और भारत की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सोच का प्रतीक बन चुका है। The second ship in the mobile column is pennant number Tango 67, Indian naval ship Battimal. This ship can rapidly respond to maritime threats and support humanitarian and search and rescue missions. INS Battimal is commanded by Lieutenant Commander Satyaveer Singh. The third ship in the mobile column is pennant number Tango 69, Indian naval ship Car Nicobar. Propelled by water jets, she is designed for coastal and shallow water operations. She is commanded by Lieutenant Commander Ankit Amitabh. In a short while, we will witness a multinational flypast. The story of the Naval Air Arm began with a modest fleet of sea-land amphibians and Firefly target towers. The objective was to extend the eyes of the fleet. Its true transformation came through the commissioning of INS Vikrant in 1961, from whose deck the Alizé and the Seahawks operated. These aircraft proved their mettle in the 1971 war. In 1980s, the iconic Sea Harriers significantly enhanced the power projection capability. Induction of the Tupolev 142M and the Ilyushin 38 maritime reconnaissance aircraft further extended the horizons of the fleet. Fast forward to today, and we see a paradigm shift. The versatile MiG-29Ks, the impressive P-8Is, agile MH-60Rs, force multiplier Kamovs, nimble ALHs, and Chetaks, reliable Dorniers, high-altitude, long-range RPAs, shipborne uncrewed aerial vehicles, all depict the rise of the Indian Naval Air Arm. No shores too distant, no war. Ladies and gentlemen, let me redirect your attention to the skies, which will soon be filled by a wide range of aircraft, including those from our friends from across the oceans. देवियों और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान आसमान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां जल्द ही भारतीय नौसेना के विमानों का पूरा बेड़ा अपनी गर्जना के साथ दस्तक देने वाला है।
Focus your eyes right ahead at those emerging dots in the sky, barely 200 feet above the water. Led by Flag Officer Naval Aviation, Rear Admiral Ajay Daniel Theophilus, Vishishta Seva Medal. These are the Chetak aircraft of the Indian Navy initiating the flypast. The banner formation of Chetaks is led by Deshmukh. देवियों और सज्जनों, अपनी दृष्टि को सीधे सामने केंद्रित कीजिए। आकाश में उभरते हुए वे छोटे छोटे बिंदु जो समुद्र की सतह से मात्र 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। You would notice the Chetak helicopters of the Indian Navy elegantly displaying the national flag and the naval ensign as an aerial salute. आप देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से राष्ट्र ध्वज और नौसेना ध्वज का प्रदर्शन एक वायु सलामी के साथ दे रहे हैं। छोटा आकार बड़ा कमाल, चेतक हर बार। Coming up next are 3 Chetak helicopters from the Angel Squadron, commanded by Commander Alok Raj. This formation includes aircraft from the Eastern, Western and Southern Naval Command units. ये रहे एंजल्स यानी चेतक। Up next are the Dhruvs, or the Advanced Light Helicopters, under the command of Captain Saurabh Srivastav in arrow formation, the Kestrels. देवियों और सज्जनों, HAL द्वारा निर्मित यह स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। आपकी नजरों के सामने एरो फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए ALH ध्रुव। Ladies and gentlemen, get ready to be enthralled by a majestic display of aerial prowess, testament to India's growing maritime might, by 3 multi-role helicopters, the MH-60R. Look ahead and with a huge round of applause, welcome one of the most advanced anti-submarine warfare helicopters of the world, the Arrow formation of Seahawks, led by Captain Siddharth Rana. Now appearing in front of us are 3 Sea King helicopters in arrow formation. The formation is led by Commander Yuvraj, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 350. आसमान से निगाह, समुंदर पर राज, सी किंग का यही है अंदाज। Here comes the Kamov 28 multi-role helicopter piloted by Commander Priyadarshi Paritosh, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 333. डबल रोटर की ताकत, दुश्मन पर घातक, यही है ईगल्स की ताकत। Three Kamov 31 helicopters, the Falcons, are up next, ladies and gentlemen. This arrow formation of Kamov 31 airborne early warning helicopters is led by Captain Venkatesh Kumar, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 339. ऊंचाई से निगरानी, सटीक जानकारी, यही है फाल्कन्स की तैयारी। Ladies and gentlemen, keep a lookout right ahead. Shortly, we'll approach the Dorniers in a diamond formation. Ma'am, this formation is led Dorniers call sign kites. Dornier's call sign kites are led by Commander Abhinav Handa, Commanding Officer of Indian Naval Air Squadron 311.
भारतीय नौसेना का डॉनियर समुद्र और आसमान में सुरक्षा का एक अटूट प्रहरी है। यह विमान समुद्री क्षेत्र की निगरानी, खोज और बचाव अभियानों तथा तटीय सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। आ रहे हैं सटीक उड़ान का शानदार प्रदर्शन डायमंड फॉर्मेशन में डॉनियर्स। Ladies and gentlemen, look ahead. We can see the 3 Coast Guard Dornier patrol aircraft in an arrow formation, led by Commandant A. Rashim Kalingal. भारतीय तटरक्षक के मैरीटाइम रिकनेंसेस डॉनियर जहाज किसी भी आपदा में सबसे पहले पहुंचते हैं। तटरक्षक के आदर्श वाक्य वयम रक्षामः को सार्थक करते हुए आ रहे हैं तीराकार फॉर्मेशन में सीजी डॉनियर्स। Approaching shortly is the French Navy's Atlantique II, a long-range maritime patrol and reconnaissance aircraft piloted by Lieutenant Matthew Jeffrey. Today, her presence here reflects the strong maritime partnership between India and France. यह विमान लंबी दूरी तक समुद्र में विमानों और जहाजों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है और इस विमान की उपस्थिति दोनों देशों की नौसेनाओं के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक। Up next is Indian Navy's latest maritime patrol aircraft, the P-8I Poseidon from Indian Naval Air Squadron 312, the Sky Lions, commanded by Captain Akshay Raja. These sophisticated platforms are the frontline anti-submarine patrol aircraft in the Indian Navy today. देवी और सज्जनों, P-8I के संचालन से भारतीय नौसेना की क्षमता में मजबूती आई है और यह देश की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया है। रफ्तार भी, रेंज भी, P-8I है तैयार अभी। Ladies and gentlemen, keep your eyes peeled to the skies lest you miss it. The Hawks will zoom past at speeds in excess of 400 kilometers an hour. Ladies and gentlemen, here come the 7 Hawks in an arrowhead formation, led by Captain V.A. Latif, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 551, the Phantoms.